Hello students, how are you? Hope you all are well. In last video, we have studied about the balancing of equation. In this video, we will study about the different characteristics of reactions. But before going to the characteristics, we will discuss about the reactivity series which we have learned in the 8th class. Now, the reactivity series. In this reactivity series you can see the different metals जो कि कुछ हाइड्रोजन से ऊपर है और कुछ नीचे. जो ऊपर है वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है और जो नीचे है वो कम. टॉप टू बॉटम आने पर रिएक्टिविटी कम हो रही है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपको दिख रहा होगा पोटेशियम, तो सबसे कम रिएक्टिव प्लेटिनम है जो कि गोल्ड के बाद आएगा. नाउ व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. जब हम रिएक्शन की स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि हायर रिएक्टिव एलिमेंट विल डिस्प्लेस द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में स्टडी करेंगे. मतलब ये है कि पोटेशियम जो है वो सोडियम को तो डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन सोडियम जो है वो किसको डिस्प्लेस करेगा, कैल्शियम को. तो उसको आगे से आगे देखें तो मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस करेगा. तो इसको याद करने के लिए बड़ा ही इजी ट्रिकी वे है. फॉर एग्जाम्पल जैसे के फॉर कालू, एन ए फॉर नाम, सी ए फॉर का, Mg फॉर माली, Al फॉर आलू, Zn फॉर जरा, Fe मीन्स फीके, Sn मीन्स से, Pb मीन्स पकाता, H मीन्स है. मीन्स कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है. लेकिन किस में पकाता है, वेसल्स में. तो हम जो लास्ट के चार हैं उनको कैसे याद करेंगे कि जो सबसे चीपर है वो सबसे पहले और जो सबसे कॉस्टलियर है वो सबसे बाद. जैसे सबसे चीपर की बात करें तो वो है कॉपर, फिर है सिल्वर, फिर गोल्ड एयू और उसके बाद है प्लेटिनम. तो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्टिविटी सीरीज. Now the characteristics of chemical reaction. First is evolution of gas, formation of precipitate. Third is change in color. Fourth is change in temperature. And fifth is change in state, that is solid to liquid, liquid to gas, gas to solid. First is formation of precipitate. When we add a solution to another solution, then chemical reaction take place in which higher reactive element displaces least reactive element और एक सॉलिड प्रोडक्ट सॉल्यूशन में सेपरेट हो जाता है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम फिल्टर कर सकते हैं और उसी प्रोडक्ट का नाम है प्रेसिपिटेट. और रिएक्शन को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फॉर एग्जांपल जो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है उसको हम अभी डिस्कस करते हैं. For example, in this reaction, we will see that PbNO3 whole twice means lead nitrate plus potassium iodide. When both react together, means these are reactant, they will form PbI2 lead iodide, which is yellow color precipitate, and one another byproduct potassium nitrate is formed. तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि जो पोटेशियम है वो हायर रिएक्टिव एलिमेंट है फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज यू कैन सी. तो ये क्या करेगा, पोटेशियम ये लेड को डिस्प्लेस कर देगा बिकॉज लेड इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम. तो लेड जो है ये पोटेशियम की जगह आ जाएगा और पोटेशियम लेड की जगह चला जाएगा. तो ये एक दूसरे की क्या कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट. तो इसीलिए इसको म्यूचुअल, अगर ये एक दूसरे को म्यूचुअल डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और प्रेसिपिटेट बनने की वजह से इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे. Now the activity you can see that lead nitrate solution which is given in the test tube and potassium iodide solution which is added, then it will form lead iodide which is yellow color precipitate and potassium nitrate which is soluble in the solution. You can see yellow color precipitate will settle down in the bottom and which can be filtered out.
Now, change in color. You can see that in one measuring cylinder there is copper sulfate and iron nail which is blue in color, and in second iron nail becomes brown due to copper, and copper sulfate turns into iron sulfate which is green in color. And in second, in potassium dichromate solution, when we pass acidified SO2 gas, then the orange color of potassium dichromate changes into green. It also shows the displacement reaction which occur inside it. Now, how this reaction occur, we will discuss. When iron nail is put into copper sulfate solution which is blue in color, then iron will displace the copper because iron is more reactive than copper in the reactivity series, so it will easily displace the copper, and the copper ion will deposit on the iron nail. The copper, it is deposited on the iron nail, and the blue color solution will turns into green color. जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा और कॉपर सल्फेट की जगह आयरन सल्फेट बन जाएगा. दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो. नाउ द एक्टिविटी हाउ आयरन नेल चेंज टू ब्राउन इन कलर बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Now you can see the color of iron nail, it turns into brown. Now evolution of gas. You can see the reaction in which displacement reaction occurs. How more reactive magnesium and zinc displaces least reactive hydrogen and release hydrogen gas. The upward arrow shows near hydrogen the evolution of gas. Now, how can we test hydrogen? It is Pope sound test. As you can see in the diagram, hydrogen gas formed and a burning candle bring near the bubble of hydrogen. It gives the pop sound. Now, we will discuss the activity that how hydrogen gas formed. These are the material required. We have taken 10 ml of dilute HCl in the test tube. You can see the zinc metal in the form of granules, and we put some zinc granules inside it. You can see the formation of hydrogen gas in the form of bubbles. Now we put a delivery tube inside it, and in the petri dish you can see the soap solution. When hydrogen gas blows into the soap solution, it forms the bubbles. Now change in temperature. There are two types of reaction. One is exothermic and another is endothermic. Exothermic means heat is released during the reaction. Endothermic means heat is absorbed. You can see in the diagram when we add water in quicklime, जिसको हम चूना भी कहते हैं, then it becomes slaked lime, calcium hydroxide, and a lot of heat is produced. So it is a exothermic, but in photosynthesis you can see the sunlight is necessary for the formation of food, so it is endothermic reaction. Now let's discuss the activity. When we add water into quicklime or calcium oxide, then a lot of heat is produced. You can see it will produce calcium hydroxide. Calcium hydroxide is also called lime water. You can see the heat form.
Now the next characteristic is change in state. When wax is burned, then water and carbon dioxide is formed. Now, wax is a solid, water is a liquid, whereas carbon dioxide is a gas. This means that during the combustion reaction of wax, the physical states change from solid to liquid and gas. So, this is all about the characteristics of the reaction. Thank you.